Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. There's a video on daily news and editorial analysis, which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. So the most important news and editorial of the day will be discussed in this session. Let's get started with news topic list. Today is 12th of April. The first news is NITI Aayog puts Energy and Climate Index list. We'll see the detail about this. Second, ISC study concern over microplastic in Cauveryriver. Third, TERAI recommend cut in the 5G spectrum base prices. We'll see the detail and consequences of it. Second last, 2+2 meeting that focused specifically on the Ukraine crisis, the ongoing crisis which has arisen after the invasion of Russia. And the last is an editorial in Pandemicshock, critical lesson for the MSME, a brilliant editorial that will give you an insight about how the reform should go about for the micro, small and medium enterprises. Apart from this, at the end of this video, there will be MCQ based questions. These questions will be based on current affairs that will help you for the upcoming prelims examination. So without any further delay, let's get started. And if you're new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful, do not forget to press a like button. And just to tell you about the open mock test that we are organizing on every Sunday, these are the date. You can check out the dates here. And you can register yourself for the mock test. This is a high quality test that you can get at free of cost, and even some benefits would be given for the good performance. So do check out the details. मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप ज़्यादा जानकारी वहाँ से ले सकते हैं. First news of the day, NITI Aayog puts out Energy and Climate Index list. This particular news is important for General Studies Paper 2, Government Policies and Intervention for the Development of Various Sectors and Issues arising from it, design and implementation. This is again important for your General Studies Paper 3, जहाँ पे environmental concern को लेकर के topic specifically mentioned. So what is there in this new report that was released by the NITI Aayog? NITI Aayog has recently released the State Energy and Climate Index. This is a round 1 report released by NITI Aayog. So if it is being asked in many other competitive examination कि किस particular agency या organization ने इसे release किया है, the correct answer would be NITI Aayog. So the index has ranked state में दो categories हैं, larger state और smaller state, and the union territories on 6 different parameters which include discom performance, energy efficiency or environmental sustainability. Right? So these are the major areas upon which the report has specifically focuses upon. Now the state has been categorized based on their sizes, on the geographical differences. कुछ बड़े states हैं, कुछ छोटे states हैं, उसके accordingly ये पूरी report को तैयार की गई है. The index is based on 1920 data. Again, a factually important point. If it's being asked in examination कि data की reference क्या रखी गई है, the correct answer would be for 1920. Now, what is the aim of this index? Why NITI Aayog has come up with the index? So the State Energy and Climate Index is first of its kind, which aims to track the efforts made by the state as well as the UTs, that is the union territories, in terms of climate and energy sector. जो climate को लेकर के climate mitigations है, climate change programs है, वहाँ पे और energy sectors पे what is the role of the state and union territories. So these parameter has been devised keeping in the mind for India's goals in the climate change and clean energy transitions की तरफ जो इंडिया की अपनी कमिटमेंट है, जो ग्लोबल कमिटमेंट है, उसकी तरफ एक खासा ध्यान देने की जरूरत है, how things are working. And at the end of this news, I'll be discussing what are the India's commitment globally. So let us see how is the performance of the states. Specifically, if you look into the report, this report has categorically stated 3 categories of state. First is the largest, second is the smaller, and third is the union territories. So among largest state, the best performing state is Gujarat, that has topped the list, right, in the State Energy and Climate Round 1 Index. उसके बाद this is followed by Kerala, Punjab, that has been ranked among the top 3 performances. तो पहला नंबर अगर पूछा जाए, the first would go to Gujarat, second followed by Kerala, and third is Punjab. So these are the ranking. Now other categories में अगर बात करें, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये ऐसे states हैं जो तीनों bottom की performance में है. Now smaller states में किन states की performance अच्छी रही है? This is Goa, the top performer, and a smaller state followed by Tripura and Manipur. Among union territories, Chandigarh, Delhi, Daman and Diu, Nagar and Haveli are the top performers. Now I'll give you a chart also that will give you a clarity on understanding. तो ये देख सकते हैं आप कि रैंकिंग है कुछ
10 important states की, largest states की. You can take the screenshot of this also. तो ये जो मैंने आपको बताया कि जो 6 ऐसे पैरामीटर्स हैं, फर्स्ट इज द डिस्कॉम परफॉर्मेंस, सेकेंड इज एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, उसके बाद क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स, एनर्जी एफिशिएंसी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कुछ न्यू इनिशिएटिव्स और SCI के स्कोर्स हैं. तो ये कुछ 6 ऐसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं जो स्टेट्स ने लिए हैं, उनके पैरामीटर्स पे स्टेट्स की रैंकिंग की गई है. सो दीज 6 different domain is also important for examination. So first rank which I have already discussed, गुजरात है. 3 परफॉर्मेंस गुजरात, केरला और पंजाब, उसके बाद हरियाणा, उत्तरांचल, देन महाराष्ट्र, फॉलोड बाय हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आसाम. नाउ दिस आर फॉर द स्मॉलर स्टेट्स. बेसिकली स्मॉल स्टेट्स में बात करें, अगर टॉप परफॉर्मेंस की बात करें, इस गोवा एंड त्रिपुरा, फॉलोड बाय मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश. The parameters are same here again. And if you talk about the union territories, जो top 4 performer है, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर एंड नगर हवेली एंड पुडुचेरी. उसके अलावा अंडमान एंड निकोबार, JNK एंड लक्षद्वीप. Now other category rankings में अगर बात करें, पंजाब is the best performer in discom performance with Kerala topped in the access, affordability and reliability categories. And Haryana was the best performer in clean energy initiatives, and other states in Tamil Nadu energy efficiency category. Now India at global stage की अगर बात करें, what was India's performance at the global level, और इंडिया की क्या कमिटमेंट है, इंडिया की क्या एक्चुअल कमिटमेंट है ग्लोबल लेवल पे, which I have stated in the beginning. तो कुछ इंपॉर्टेंट कमिटमेंट्स की देख लेते हैं. इंडिया हैज सेवरल मेजर्स इन इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल which call for energy and climate issues. Now India has achieved, highlighted the forum, basically electrifying की बात की गई है 6 lakh village को almost. And India has also announced that net zero emissions by 2070 at COP26. And UN Climate Change Conference was also held recently in the Glasgow, where India specifically and categorically has set about net zero emissions target to be achieved by 2070. So these are some of the measures intervention as a part of India that India has already stated in the global and multilateral forums. Now India presented है 5 nectar element, जहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने पंचामृत की बात की थी. The first is India would have the non-fossil fuel installation by 500 gigawatt by 2030. This is the first commitment. This is a very, very important slide. You can take the screenshot. There are many vital information that can again help you both in prelims and mains examination. Second target जो है, India has to meet 50% of electric requirement by renewable energy by 2030. So this requirement has to fulfill by 2030. India will reduce the projected carbon emission by 1 billion ton. This is again by 2030. And by India will also reduce the carbon intensity of an economy by 45%. This is by how much? This is by 45%. And by 2070 net zero emissions की target already मैंने discuss की है, ये भी target है. तो ये कुछ ऐसे measures target हैं जो इंडिया को achieve करनी है in the years of 2030, 2050 and 2070. Now, IIC study concerns over microplastic and Cauveryriver. This particular news is important for General Studies Paper 3, Conservation, Environmental Pollution, Degradation and EI. So, a recent study published की गई है by Indian Institute of Science, where it says that the pollutants like microplastic, this is again something very important. If you have not read about microplastic, you can check it out because ये ऐसी टॉपिक है जो UPSC Prelims में हमेशा ही important रही है. UPSC ने questions भी पूछा हुआ है because the common examination, that is Indian Forest Services and Civil Services, the reason being these type of questions related to environment become vital for your exams, right? तो इसके बारे में आप और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं. So this was the cause of the concern because this has led to the death of many fisheries, fishes, including the deformities in the river Cauvery. So specifically these reports were mentioned about the river Cauvery. The study was published in the journal called as Ecotoxicology of Environmental Safety. The researcher were trying to understand कि किस तरह से जो microplastics है वो हमारे environment में enter करती है और जो ecosystem है, जो actual animals है, fisheries है, aquatic ecosystem है, उसको कैसे impact करती है negatively. So these were the most study which focus upon the negative and harmful impact of the microplastics. Now, water is essential for everywhere, including the animal and plant. Water is an important component in the entire universe. Even we as an individual, as a human being, require water clean, and water that is should be clean, and that should be something which would be free from the pollutant as well. So when it is polluted, it is capable of causing diseases, including the
cancer both in human and for other animals as well. नाउ कंप्रिहेंसिव स्टडी ऑफ पॉल्यूशंस की अगर बात की कैसे की गई है, तो आईएसए ने जो स्टडी कंडक्ट किया है, कंप्रिहेंसिव पॉलिसी फॉलो की गई इस पूरे स्टडी में, एंड दिस कलेक्टेड द वाटर सैंपल फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन विच हैज फास्ट फॉलोइंग स्लो एंड स्टैग्नेंट वाटर. तो 3 कैटेगरीज ऑफ रिवर को बेसिकली वाटर कैटेगरीज को लिए गए और उसमें सैंपल को स्टडी किया गया कि किस तरह से एक्चुअल इम्पैक्ट करती हैं वाटर लेवल और उस इकोसिस्टम को. Now, in first part of the study, the team has analyzed the physical and chemical parameters of the water sample. देखी गई कि dissolved oxygen कितनी है. 2 चीजें होती है, BOD that is biological oxygen demand and DO that is dissolved oxygen. इन दोनों के difference को आप समझ लें. This is important for you. You can, if you have read, it's well and good. Eitherwise, you can check the NCERT also, right? तो यहाँ पे कहा गया है कि जो samples collect हुए हैं उसमें slow flowing या फिर stagnant sites में इस तरह की चीजें देखी गई कि जो DO है वो actual में कम है. Now, water of the sites have also contained the microbes, which is known as Cyclopus, Taphania, Spirogyra, Spirocheta और E. coli. ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो इंडिकेट करती है वाटर कॉन्टेमिनेशंस को. सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रीलिम्स में, ये आपसे पूछा जा सकता है that these animal, which among the following animals can act as a bio indicator for the water contaminations. यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पहले पूछा हुआ बट नॉट डायरेक्टली इन दिस रिगार्ड, बट दे कैन आस्क यू वेरी वाइटल क्वेश्चन कि कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि वाटर कॉन्टेमिनेशन, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स हैं जो कॉन्टेमिनेशन के बारे में जानकारी देते हैं. तो मेक श्योर आप इस जितने भी मैंने आपको नाम बताया 5 नाम ये आप आराम से याद कर ले. दिस कैन बी हेल्पफुल फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. Now, Raman spectrography की अगर बात करें, this technique was used by the team of to detect the microplastics. ये बेसिकली एक नेकेड आई से माइक्रोप्लास्टिक्स दिखती नहीं है, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए इस तरह की स्पेक्ट्रोग्राफी की जाती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं इसको. एंड द टॉक्सिक केमिकल कंटेनिंग द cyclohexyl functional group, that is atom in the compound, has to be determined by the chemical properties. So these are some of the methodology that is being incorporated in terms of identifying the microplastics in an aquatic water system. जो सेकंड स्टडी की गई है उसमें टीम ने इन्वेस्टिगेट किया है कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं वेदर दैट अकाउंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एबनॉर्मलिटीज विद द वाइल्ड फिश और नॉट, बिकॉज वाइल्ड फिश आर कैपेबल टू सम एक्सटेंट टू टॉलरेट इट, बट अगेन दे आर नॉट ऑल्सो दैट कैपेबल. तो वाइल्ड में क्या इसकी इन्फ्लुएंस है वो देखा गया. द डिफेक्ट्स वर सीन इवन द माइक्रोस वेर अनफिल्टर्ड आउट, सजेस्टिंग द माइक्रोप्लास्टिक of the cyclohexyl functional group is responsible for the elements in the fish as well. So it can impact to the larger and the wild fish also. The researcher has also found कि जो molecules हैं basically ROS, that is reactive oxygen species in the cell of the fish has developed abnormally. तो ये कुछ repercussion है, negative consequences हैं और impact है for the microplastic that is growing in the aquatic water system. Now, the other news, that is TRI recommended cut in 5G spectrum base. This news is important for General Studies Paper 3, that is Indian economy and issues related to planning, mobilization, resource, growth and development. The Telecom Regulatory Authority of India, we also known as by the name of TRI, they have recently recommended कि 35 to 40% जो reserve price है specifically for the 5G, इतनी उसमें reductions होनी चाहिए, खास करके वैसे बैंड जो कि 3300 से 3670 मेगाहर्ट्ज के रेंज में आते हैं. The TRI has also suggested easing the norm for the minimum rollout of MRO, that is minimum rollout obligations जो होती है उसकी deployment की जाए for 5G, and new entrants in the telecom sector should also be promoted. Right? We have seen that many important telecom operators have already done the trials in the major cities, tier 2 cities जितने हैं या फिर जो metropolitan cities है वहाँ पे already trials हुई हैं, and even Airtel is coming with some of the 5G services. Very soon, by the end of this year, we can expect the rollout of the full-fledged 5G services in our country. For example, 70 Hz, 80 Hz, 700 Hz, 800 Hz, 900 megahertz और 1800 जो megahertz है वो trial basis पे की गई थी. And TRI has also suggested a time period of MRO should be extended to 2 years from the currently 1 year. सो एक लेजिटिमेट टाइम देने की बात की गई है कि जो ट्रायल प्रोसेस है वो अपने ड्यू प्रोसेस और जो डिलीजेंसी उसको फॉलो करे ताकि कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए. नाउ व्हाट ट्राई हैज एक्चुअली सजेस्टेड, सो द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज सजेस्टेड दैट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर should be allowed to surrender the spectrum easily by paying the spectrum surrender fee of 1 lakh rupees per spectrum, right? जहाँ पे लाइसेंस एरिया जो है उसको भी कवर किया जाएगा. एंड फॉर अ लॉन्गर टर्म एंड ग्रोथ ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ द टेलीकॉम सेक्टर
infusing liquidity, encouraging investment, and the telecom services provider should be allowed for an easy payment option, including the part payment and flexibility of the moratorium. So these are some of the suggestions that were incorporated and suggested by the TERM. Now, ease of doing business, something very pivotal for this sector, because अगर ease of doing business नहीं होगी तो बहुत ऐसी कंपनीज होंगी जो इस ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहेंगे और इस हेजल्स में फंसना नहीं चाहेंगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to ensure कि एक ease of doing business है. And even government of India wanted that for telecom sector there should be the ease of doing business process. तो ये ऐसी एक ऐसी प्रोसेस है जो डेफिनेटली पूरे इन्वॉल्व जो एक सेंटिमेंट है, जो एक एम्बियंस है इन्वेस्टमेंट की, उसको प्रमोट करेगी. एंड DUT in September has suggested measures to roll out the return policy which is no longer in use, right? And even TRAI has also recommended the enterprises that wanted to create a private network that should be capable of having a telecom services provider जो कि एक independent isolated private network enterprises होंगे using the company spectrum. So ease of doing business is something that is again important. If you're writing in mains paper, आप इस aspects के बारे में ज़रूर लिखें कि किस तरह से ease of doing business प्रमोट कर सकती है investment for the telecom sectors. Now looking into this graph, this will give you an idea about the earlier and the current price and the cut that is anticipated. For 700 megawatts it is 40, for 800 it's 22, for 1800 this is 35, and for other this is 35 to 6. So this is a basic idea about the price recommendations cut that was recommended by the Telecom Regulatory Authority of India. Now 2+2 focuses on Ukraine crisis. The recent ongoing meeting physically भी हो रही है, but virtually India के जो Prime Minister है, he is attending this virtually. So this is important for General Studies paper 2, bilateral regional grouping and agreement evolving India's and affecting India's interest. So recent में जो video conference हुई है between the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, and the US President Joe Biden के बीच में 2+2 के पहले एक वर्चुअल मीटिंग हुई जहाँ पे मेजर डोमिनेंस रही यूक्रेन के क्राइसिस को लेकर के, जहाँ पे रिसेंटली रशिया ने इन्वेड किया. US has been vocal about this part, that what Russia has done is at all not should be tolerable. They have sanctioned Russia multiple times, but India has abstained from the voting, and even to some realization, in fact, India बेसिकली US ये ऐसे ओपिनियन में नहीं है. जिस तरह से इंडिया ने एक्शन लिया है, अपनी बेसिकली ओपिनियन दिखाई है, वो US उस चीज़ से इत्तेफाक भी नहीं रखता है. तो दे वांटेड कि इंडिया को वोटिंग करनी चाहिए थी एंड दे शुड बी वोटिंग अगेंस्ट रशिया, बट इंडिया के अपने कमिटमेंट्स हैं, अपने बायलैटरल रिलेशनशिप है रशिया के साथ. द रीजन बीइंग इंडिया हैज abstained from the voting. So this is the fourth round of 2+2 foreign level talk which is ongoing, and from Indian side जो यहाँ के होम मिनिस्टर हैं मिस्टर Amit Shah, or Union Home Minister, even Rajnath Singh is there, not Union Home Minister, this is Defense Minister is actually going, right? So Defense Minister and External Affairs Minister would be there for meeting. Now both leaders has discussed the regional and global issues which include the global pandemic, COVID-19 की जो pandemic है, global economy की जो problems है, climate और recent development in South Asia including the Indo-Pacific, श्रीलंका में जो crisis है, और जो म्यांमार में military स्कूप ने जो वहाँ पे बेसिकली पूरी टारगेट की हुई डेमोक्रेटिक सेटअप को, वो एक ऐसी कंसर्न थी जो डिस्कशन पे रही. Now the United States and India is also going to have a close consultation on how to manage and destabilize the effects of Russian war, and even for the entire world the crude oil prices has taken a surge which is impacting on the inflation for many developed and developing economies. Now moving to the editorial part of the day, is in pandemic shock, critical lessons for the MSME, that is micro, small and medium enterprises. This editorial is relevant for General Studies paper 2, government policies and intervention for the development of various sectors and issues arising from it, design and implementations. ये जो editorial है अखिलेश के शर्मा और सुशील के राय ने लिखा है. They are basically faculty for the industrial development in New Delhi. So इस पूरी editorial में किन किन बातों पे मैं फोकस करूँगा. I'll be trying to simplify this editorial by 5 important subheads which include pandemic impact on MSME, reasons for the fall in turn, gaps क्या क्या हैं बजट में, planning roadmap कैसी रही है, क्या होनी चाहिए, और way forward. So the entire editorial focuses upon the roadmap for the MSME sectors. Now let's understand this editorial in detail. बैकग्राउंड की अगर बात करें तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर, एक ऐसी क्रूशियल सेक्टर है जिसने इंडिया के ओवरऑल अचीवमेंट में
मीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बहुत ही बड़ा रोल अदा किया है. सो the evident part of MSME is that they have substantially contributed in the development of the economy, which contribute none less than 30 to 35% on our GDP. और अगर बात करें employment में तो almost 45% तक employment देती है ये हमारे sectors को. Now this sector is significant contributor in terms of industrial output, employment generation, share in the gross domestic product and export. Now beside this कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स भी लिए गए गवर्नमेंट की तरफ से सिंस इंडिपेंडेंस, बट अगेन द चैलेंजेस इज स्टिल फेस्ड बाय द एमएसएमई सेक्टर और कोविड-19 ने इस सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स्ट किया. सो क्या इम्पैक्ट रही है कोविड-19 की पेंडेमिक की एमएसएमई सेक्टर्स पे? इट हैज़ एक्सपोज्ड मोर वनरेबिलिटी टू द एमएसएमई सेक्टर. नाउ ड्यूरिंग पेंडेमिक एमएसएमई सेक्टर वाज अमंग द वर्स्ट हिट सेक्टर, जहाँ पे सप्लाई चेन और डिमांड में बहुत ज़्यादा गिरावट दिखी गई और अभी तक कुछ ऐसे कंक्लूसिव मेजर्स नहीं लिए गए जहाँ पे पूरी रिवाइवल देखी है एमएसएमई की. द सेक्टर इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव एंड रिकवरिंग फ्रॉम द प्री पेंडेमिक शॉक्स व्हिच वाज एक्चुअली बीइंग विटनेस्ड बाय द एमएसएमई, राइट. रीजंस की अगर बात करें क्या क्या ऐसे रीजंस हैं व्हिच हैज मेड दिस सेक्टर टू फॉल इन टर्न. सो कुछ बहुत ऐसे रीजंस हैं बट मैं आपके साथ कुछ एक स्पेसिफिक रीजन को हाईलाइट करूंगा. द फर्स्ट रीजन इज restriction on the economic activities and mobilities. Second is decrease in demand because the demand has completely fallen. Surge in the shortfall of the raw material. We import most raw material from China and other countries. तो अभी जिस तरह से रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है और इवन पेंडेमिक के टाइम में जिस तरह से ट्रेड पूरी कंट्रीज से बनती है वो एक इम्पैक्ट किया रॉ मटेरियल की शॉर्टेज में. Restrictions on trade again, slow economy recovery in the market and even payment delays in the labor shortage. These were some of the problem and the reason for fall in turnover. बजट में भी कुछ गैप्स देखी गई. इस बार के बजट में बेसिकली जो ब्लूप्रिंट है वो फोकस कर रही है अमृत काल के बारे में for the next 25 years, but it has not specifically or categorically has stated about the revival plan for the MSME sector in the longer run, which is again a problematic because we want the revival of this MSME sector immediately, जिसके substantial contribution है इंडिया के GDP पे भी और overall जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है उसको भी इंक्रीज करने में. बेसिकली जो एम्प्लॉयमेंट है अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रही है उसकी जो क्षतिपूर्ति है वो एम्प्लॉयमेंट के थ्रू होगी एंड दस एम्प्लॉयमेंट can be addressed through the MSME sector. So MSME has substantially contributed in the employment generations. So we should be looking into this aspect. और budget की जो specific focus होनी चाहिए वो वैसे नहीं रही है and the experts are also of the opinion that government has missed on this part. Now planning roadmap की अगर बात करें क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरह की रोडमैप होनी चाहिए, तो कोविड is neither a first pandemic for the entire world. ऐसी पेंडेमिक हुई है इससे पहले सार्स 2002-04 में, H1N1 इन्फ्लुएंजा 2009 में, उसके बाद MERS 2012 में और जीका वायरस जिसमें इंडिया की उतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुई थी बट ग्लोबली सप्लाई चेन इम्पैक्ट हुई. तो वी हैव टू लर्न लेसन. एवरी सेंचुरी हैज़ विटनेस सम ऑफ दिस पेंडेमिक बट कोविड-19 जो थी वो पूरे अभी तक के काल में जितनी टाइम से ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट कर रही है अभी तक की सबसे वर्स्ट पेंडेमिक रही है, राइट. सो द MSME एंड इनफॉर्मल सेक्टर विच हैज़ लैक रजिस्ट्रेशन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट उनको बेनिफिट्स भी नहीं मिल पाए एंड दीज फर्म वेयर ऑन द रिस्क फॉर शटिंग डाउन. तो ये और एक बड़ी डिजास्टर्स है जहाँ पे गवर्नमेंट को ध्यान देने की जरूरत है. देयरफॉर देयर इज नीड टू डेवलप द मैकेनिज्म वेयर MSME should help to rescue and even revive the business uncertainty caused by the economic shocks. Now way forward की अगर बात करें, in order to make MSME sector resilient, there is a need for provisions of emergency fund for the small businesses that should be mandatory and from the beginning also. Similar public provident fund जो है government can initiate कि एक uncertainty corpus fund बनाया जाए for small businesses so that they can have a safety net to get the finances done. And the fund can be used to meet the financial need of the small firm which is doing the business in uncertainties. तो ये उनको help करेगी, backing देगी to get the financial assistance. Now other measures include small business insurance scheme which can have a similar terms of insurances. Now moving ahead with the MCQ questions of the day. Before I proceed, just to tell you the answers of yesterday questions. For first question, the correct option is C. For second question also the correct option is C. Today's MCQ for practice. आपको बताना है इनर लाइन परमिट के बारे में. ILP issued by the Union Home Affairs Ministry, that is MOH, आप बोल सकते जो Ministry of Home Affairs है MHA उनकी तरफ से. And the system is enforced today in North Eastern Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram and Manipur. Recently government ने हर एक स्टेट्स में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को रिड्यूस किया है. सो दिस बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स. सेकंड,
कोवैक्स प्रोग्राम के बारे में आपको बताना है. कोवैक्स is a program which is led by the Alliance Gavi and Coalition for Epidemics and Preparedness. और ये एम है इस प्रोग्राम की कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो वर्ल्ड वाइड फॉर द कोविड-19 वैक्सीन्स. If you know the correct answer, it is well and good. If not, you can check out and search for the correct options. So this was all about for the daily news and editorial analysis, followed by the MCQ questions. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.